finally, Mumbai police has arrested the main suspect in the Saif Ali Khan stabbing case. And the big story we are tracking right now, there's also a huge possibility that this main suspect could be a Bangladeshi national. That is right. Now, the police are still verifying those details, but we're getting you all these updates coming in back to back. Let's take our viewers through what the latest is. After a 70-hour manhunt for the man who stabbed Bollywood actor Saif Ali Khan 6 times, I repeat, 6 times in his Bandra residence, the Mumbai police have arrested the suspect. The latest development, the police is suspecting the attacker could be a Bangladeshi national, viewers. Now, the Mumbai police on Sunday morning confirmed that the person arrested for allegedly attacking the actor Saif Ali Khan is an illegal immigrant from Bangladesh. Now, there's still some details we have to get on that, but this is one of the top angles we're tracking on Republic TV. The accused is identified as Mohammad Shariful Islam Shehzad, entered the residence of the renowned actor with the intent to commit theft. And earlier during a press conference, the Mumbai police states that there was a preliminary evidence suggesting the accused is a Bangladeshi national. He does not have any valid Indian documents. Some items seized indicate that he is a Bangladeshi national. That is right. It was also revealed the accused is a native of a place called Jhalokati district in Bangladesh. Now, the big development is, and what we can expect later on, is that the accused will be produced before the Bandra holiday court today itself. That is right. Now, we are also getting you these updates. We showed you pictures a short while back of the suspect who we believe, according to information, worked as a waiter at a restaurant in Mumbai, was tracked down at a construction site in the Hiranandani state, where he was hiding in the dense bushes. I want to go ahead and play out all the reactions we are getting for our viewers. There is a primary evidence to anticipate that this accused is a Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. सैफ अली खान पर हमला करने वाला मोहम्मद शहजाद ये बांग्लादेशी है, थाने में रहता है। मुंबई पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। मैं धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र पुलिस से प्रार्थना करता हूं कि ये जो यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या महाराष्ट्र में जगह जगह घुस गए हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनको एक एक को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। सैफ अली खान पर हमला करने वाला और उनके घर पर जो चोरी की मंशा से घुसा था, उसे पुलिस ने दबोच कर अब हिरासत में लिया है। अब तफ्तीश के बाद, सारे तथ्यों को खंगालने के बाद क्या कारण था, वह सभी बातें सामने आएंगी। और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात है, महाराष्ट्र की सरकार हर घर घर जाकर उन्हें चुन करके निकालेगी और जहां से आई थी उन्हें कड़ा दंड देते हुए उन्हें वापस करेगी। The police have informed that the attacker and the culprit in the Saif Ali Khan case is a Bangladeshi. The Shiv Sena and our founder, Sammanya Hindu Hriday Samrat Bala Saheb Thackeray ji, has always stood and fought against the infiltration of Bangladeshis into India, into Maharashtra and Mumbai. I think not only should the accused be punished severely, but also there should be a crackdown on all the illegal Bangladeshis who are staying in our country. Let's go straight across to my colleague who's joining us. So we are being joined by Satya Prakash live from the Bandra police station. We'll also be joined by my other colleague Sandeep and Akhil and short while from now. But I want to go first to my colleague Satya Prakash. And Satya Prakash, you know, the accused will be produced before the Bandra holiday court today. Today, by the way, viewers, is a Sunday. Satya Prakash, yes, go ahead. When we can expect that to happen?
देखिए शिवांगी, दोपहर बाद जो अक्यूज है, जो आरोपी है, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसको रिमांड मांगेगी पुलिस, क्योंकि अभी कई ऐसे राज है जो कि सामने आना बाकी है। मुंबई पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो आरोपी है कैसे घुसा, कैसे उसको पूरी जानकारी मिली और किस आधार पर घुसा। इन सारी चीज़ों के लिए खंगालने में लगी हुई मुंबई पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो बांग्लादेशी नागरिक है, जो पकड़ा गया, जो गिरफ्तार किया गया है, उससे जो राज है उसको निकलवाया जाए, उसे उगलवाया जाए और लगातार कोशिश कर रही कि उसका मकसद क्या है। हालांकि मुंबई पुलिस ने कह दिया है कि साफ तौर से कि इसका मकसद था, चोरी का मकसद था, लेकिन जिस तरह से आरोपी जो है वो जिस तरह से सैफ अली खान के घर के अंदर घुसा और जिस तरह से अंदर जाकर जिस तरह से अटैक किया, इन सारी चीजों की जानकारी कैसे थी, क्या पहले से रेकी किया था, इन सारी चीजों को लेकर मुंबई पुलिस खंगाल रही है और लगातार जो आरोपी है उसे पूछ। शिवांगी। Yes, absolutely. Satya Prakash is joining us live.